So we have recorded till the daters. Trade daters हमने record कर लिया 4,80,000 का. Now we have to record trade creditors of 3,40,000. So go in the liability side and record trade creditors. Like 40. Then we have a cash at hand and the cash in bank. 1,20,000 both will be recorded in the asset side. 1,20,000. Now class, one more thing, please do not forget about this closing stock. Closing stock as on 31st March 2017, because many of the students forget. ये जितना इधर हुआ उतना ही पोस्ट किया, फिर ये वाला पार्ट भूल जाते हो, तो ये वाला पार्ट मत भूलना, दैट यू इवन हैव टू पोस्ट दिस वैल्यू ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक एज वेल. सो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? वन विल बी इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय closing stock. Dollar 21,500 to closing rate, that is 50. 10,75,000. Second effect will be in the asset closing stock. So now we are done with almost recording of each and every item. Now we have to first close the trading account. The total is 85,63,000, whereas debit side ka total is 69,70,800. So credit is higher than the debit. $85 lakhs. Now, this about the exchange gain. हम जब इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन करते थे तब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते थे. व्हाई? बिकॉज इन द इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इट यूज्ड टू गो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट वेयर इज when you are preparing non integral foreign operation, ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका ट्रांसफर होता है रिजर्व में, and that name of a reserve is foreign currency translation reserve. And where you record the reserves? Balance sheet liability side. So you do not have to record this in the profit and loss account. This will rather go in the liability. और liability में भी आप क्या नाम से इसको लिखोगे? Foreign currency translation reserve. Currency. $4,66,800. तो सीधा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? $92,000.
profit, add it down. Gross profit, brought down. डेबिट का टोटल इज 4,90,000. So obviously the credit is higher than the debit. $11,02,200. अब ये कहां पर होगा? एचओ के अकाउंट में इट विल बी एडेड. नेट प्रॉफिट, $11,02,200. $31,52,200. लायबिलिटी साइड का टोटल 39,79,000. Here it will be 39,79,000. The only difference which we could find it out right now in the integral foreign operation and non-integral is, in the non-integral all the items of a balance sheet will be recorded on a closing rate, whereas in the integral agar fixed assets ka agar separate rate is given, then we have to take down the fixed assets rate. Even in the integral aapko confuse karne ke liye fixed assets rate diya hoga, but you will have to ignore it up. Then whatever if you are getting the exchange gain or exchange loss, then it will be transferred in the profit and loss account in the integral foreign operations. Whereas in the non-integral foreign operations, अगर if you are getting an exchange gain or exchange loss, तो exchange gain हुआ तो भी आपका वो क्या हो जाएगा? Reserve बन जाएगा, foreign currency translation reserve. And we all know that reserve we recorded in the balance sheet liability side. And if they are asking you to post the adjustments as well, ये जो एडजस्टमेंट है वो भी अगर आपको बोल रहे कि उसका अमाउंट भी कन्वर्ट करके दो, देन यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस एंड देन यू हैव टू राइट इट डाउन. तो इसके लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्पस हमने डेप्रिसिएशन को भी यहाँ पर दिखाया एंड इवन आउटस्टैंडिंग सैलरीज को भी दिखाया.